Where did we stop in the last class? Civil disobedience movement. Before that, an act we left was very important. Let me first give it to you, the reference of what I was trying to say, and then we'll pick up from there. Acha. Pen meri. Yes. So before, because we were in this Gandhian politics, we started off with how Gandhi, how everything's changed, how when Gandhi came over. I have also given you acts का 2 PPT पहले एक्ट पे दी थी मैंने, उसमें 1935 एक्ट भी है, प्लीज उसको देखो एक बार, because act plays a very important role in UPSC Prelims. Every act is related to another act. Like the Government of India Act 1935 is now officially, we are having so many things from Government of India Act 1935. क्या क्या चीजें ली हैं हमने Government of India से? अच्छा, in our constitution. अच्छा, और अच्छा, और what else? इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ याद आ रहा है? ठीक है, पहले मैं लिखा देता हूँ 1935 का एक्ट. Why was the act of 1935 became important is also very important. You see, civil disobedience movement, which we just talked about in last class, had more people than any movement in India, apart from Quit India movement, which we will be discussing. The point is, civil disobedience movement comes in the time period of 1930 when salt law was broken, and salt played a very important role. We have discussed it. Along with that, there were certain international events which were taking place. I talked about the Russian Revolution, the Bolshevik Revolution. What was Russian Revolution about? तो French Revolution क्या बात है? Russian Revolution की बात कर रहा हूँ भाई मैं. What is the story that I talked about? Same taxation, sir. What taxation? दो शब्द सीख लिए, प्रोलेटारियत और बुर्जुआ, बस मार रहे हैं. What is proletariat? तो लोगों का प्रॉब्लम ही है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और बुर्जुआ है. चलो गुड गुड. ये ऐसे के सामने बोलो ना जिसने पढ़ा नहीं होगा, जो थोड़ा अनपढ़ टाइप का. Don't tell me all these things. You know, the conquest, they used to call it conquistador. The Spanish people used to call it conquistador. That was a term I learned in, जो तुम अभी बोल रहे हो, I learned it back then in 2008-9. When I first heard about bourgeois, मैंने कहा ये क्या है भाई? Then proletariat is a working class people. Russian Revolution was basically a revolution by proletariat or peasants against Tsar of Russia, who was having a lot of who was taking a lot of taxes from the people, and he was living a lavish life. But the point is, the people, the common masses, were suffering. So from there, from 1917, we see that in India, इसको दिखेगा आपको, we had Dalit uprising, we had women uprisings, we had peasant uprising. क्या बताया था मैंने? अवध किसान सभा कब बनी थी? 18. Okay. We had socialist becoming very part of it. क्या हुआ? हाँ बताओ. Bourgeois तो like these are people who are landlords. उनको bourgeois कह सकते हो. So we had Dalit. Who was the leader of Dalits at that point of time? In South India? Periyar. Very good. ये तुम्हारे स्पेक्ट्रम में लिखा है, फैक्ट्स मत याद करो, भूल जाना भाई. ठीक है. Then we temple entry movement of Periyar.
Vaikom Satyagraha, okay, 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 Satyagraha, and these are also very important. Apart from this, women were coming up. Kamala Devi Chattopadhyay, Beena Das, Sarojini Naidu, Usha Datta, yes, Jyotiba Phule ki wife, है ना? We have a wife of C.R. Dasta also, and socialists were within Congress who were Jawaharlal Nehru as well as Netaji Subhash Chandra Bose. Apart from these people, we had revolutionaries like Bose, or Bhagat Singh was also, like, he died in 1931, he was hanged. So these were the people who were actually fighting along with Gandhi. And what were they fighting for, and what are the other international forces which were coming up? Apart from that, we see the inception of All India Trade Union Congress in 1920. लालाजी मर जाते हैं 1920s में. He dies because of the protest. उनके सर पे लाठी रखती है, आपको पता होगा ये चीज. And that becomes a triggering point also. Why am I giving this thing? Because जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें लिंक कर पाओ नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस से. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस में फर्क क्या है ये बताओ. उसके बाद ये आगे बढ़ूंगा मैं. What is the difference with this? Mass movement and उसमें मुस्लिम पार्टिसिपेंट ज्यादा था. हाँ. This movement from every corner of our nation, people have joined. Which? अच्छा. And this British government directly is an attack towards imperialism. You can say that and our government. It is confined to a particular region. Even though we have centralization, they suppressed it, but they couldn't suppress the disobeyed movement. And it carried on. It was carried on in 1934. It was only this movement, that civil disobedience, and there were torturous negotiations between International Congress and the British Crown. Till then, we had first roundtable conference where British Congress was not a part of. Congress was a part of second roundtable conference, and then we had Gandhi-Irwin Pact. Okay, so the problem was Gandhi-Irwin Pact was that the minority question was always a question. Minorities means not only means Muslims. Minority also meant Sikhs. Minority also meant SCs. So the leaders of minorities, Dalits, was Ambedkar. Okay, so every time there was a question of Dalit politics, there were two school of thoughts. Initially, Gandhi was not with the thoughts of Ambedkar. Initially, worker class, yes. Initially, Gandhi was not in sync with what Ambedkar said. There's no discrimination, but gradually, Gandhi realizes that caste is an issue. That's why he comes up with the term Harijan Seva Sangh. अभी इसमें बड़ा मसला है. He had this ashram in Wardha. ठीक है. So Wardha में he says that there is a sense of community living, egalitarianism. Tolstoy ने बोला था. Tolstoy कहाँ था? रशिया का. Which Gandhi had a very good influence of. तो गांधी ने कहा भाई वर्धा में तो सब लोग आएंगे. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऊपर नीचे सब साथ बैठ के खाएंगे. जमनालाल बजाज की स्कूटरों की दुकान है आज तक भी. And those people who were financing him said कि भाई अगर दलित आएंगे तो हम तो भाई नहीं आएंगे और हम पैसे भी नहीं देंगे. तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये पैसा अपने पास रख और फंडिंग मेरी तेरी मुझे नहीं चाहिए. तो इतना पावर था गांधी का. दिस इज 1930s. There Gandhi established हरिजन सेवा संघ एंड ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग. ये गांधी जी ने स्टैब्लिश किए थे. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या आता है यूपीएससी में? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन was established by Ambedkar. These are two different organizations. All India Untouchability League was established by Gandhi, and All India Scheduled Caste Federation was established by Ambedkar. अभी भाई चलो पहले लिख लो.
ईयर 1932 ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। हरिजन सेवा संघ 1930s में था, टू बी वेरी दिस थिंग, 1930 लिख दो, 1930 भी लिख सकते हो, 30। अब यहाँ ये टाइम पीरियड क्यों हम बात कर रहे हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस टाइम पीरियड, बिकॉज नाउ देयर आर मेनी वॉइसेस। वुमेन की तो वॉइस तो उस टाइम पे कहाँ होती, अदरवाइज दे वुड हैव 4-5 औरतें क्या ही करेगी। But Dalits had a leader, Muslims had a leader. We'll talk about it because today we'll be doing partition also. So अभी माहौल बन रहा है. When Pune Pact was signed between Indian National Congress and this thing, Ambedkar, then there was a concept called separate electorate. मैंने क्या बताया था separate electorate किसे कहते हैं? हाँ बताओ बताओ. जब इलेक्शन होता है, इन लोगों का अलग से कॉन्शियस रहता है, they should only elect. Others are not supposed to vote, but they have something conscience and. अब क्या हुआ भाई, सेकेंड आरटीसी में एक मसला बहुत इंपॉर्टेंट आया। अंबेडकर was adamant on separate electorate, means Dalits for Dalits. I'll explain this to you. Muslims for Muslims. Means separate electorate means Muslim will only stand in that constituency and only Muslim is to vote. Inspired with this, Ambedkar said in 1931 roundtable conference which was held in London, it's there in spectrum, उसमें देख लो, लेकिन समझना जरूरी है. He said that if you consider Muslims as a separate entity, then even Dalits are considered to be untouchables, are a separate identity. So he in England along with Gandhi, because the people who were sitting in roundtable conference along with English people who were there to discuss after the stoppage of civil disobedience movement, Ambedkar said we are a separate entity. अब क्या होता, खेल क्या हो, देखो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड किसने की, अंबेडकर ने। मुस्लिम्स को तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला ही था, ठीक है, पहले सुन लो फिर लिखते रहोगे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज व्हाई वाज पूना पैक्ट साइंड। गांधी अपनी जगह एडमेंट हो गए कि नहीं भाई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ये मुस्लिमों की तरह ये भी अलग हो जाएंगे। दैट वाज द पॉइंट गांधी वाज ट्राइंग टू मेक, बट अंबेडकर सेड नो, वी आर ऑलरेडी डिफरेंट, वी कैन नॉट सिट विद अदर पीपल, वी कैन नॉट ईट, व्हाट इज द पॉइंट। Even when I'll be teaching partition after a little while, we will say that in Lahore, it was said that I read this in documentary that जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जिंदगी नहीं देखी. That was said for Lahore. Lahore used to be a very, आधे सिख रहते थे, आधे मुस्लिम्स रहते थे. So there used to be like very progressive society. And in 1940s, what happened, you all know. Anyway, coming back to Pune Pact. So Pune Pact, Gandhi वहां से आया. England he comes back after roundtable conference. So the question was separate electorate पे बात फंस गई. Sikhs were asking for separate electorate. Dalits were asking for separate electorate. Muslims तो मान ही रहे थे. So question बात यहाँ पे फंस गई. ठीक है. Then Gandhi came here and started his fast. अब अगर गांधी मर जाता, if Gandhi would have died, every single Dalit would have been killed. That was the power of Gandhi. अगर Ambedkar knew that, अगर Gandhi dies, तो everybody will kill Dalits. You know what? There's still Dalit colonies today. There are still colonies which are marginalized. So back 70 years, 80 years back, caste is an important issue. You'll have to recognize it. I'm not talking about reservation. I will not go into that domain because that's politics, pol science student का thing. I'll deal with the facts. So अब इधर आते हैं तो गांधी says that अच्छा तुझे सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों चाहिए था यार, ऐसे मसले हैं, बट आप प्लीज अपना फास्ट तोड़ दो. अब गांधी की हालत खराब हो जाती है, फास्ट दो. अंबेडकर कहता है ओके ठीक है ठीक है ठीक है. सो देन व्हाट अंबेडकर सेज, अच्छा यू डोंट गिव अस सेपरेट इलेक्टोरेट, यू गिव अस रिजर्वेशन. तो ये बात वहां से निकल के आती है रिजर्वेशन की. ठीक है, समझ गए? ओके, दैट वाज. अब तुम जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो फर्स्ट यू विल रियलाइज आरटीसी 1 आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. भाई आप इतना बड़ा मूवमेंट कर रहे हो, आपको कोई ना कोई तो कंसेशन मिलेगा. तो पहला आरटीसी, आरटीसी में पहले आरटीसी में, आरटीसी मींस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस इज नॉट अ पार्टी. सेकंड, व्हाट वाज द इशू आई जस्ट टॉक्ड अबाउट. नो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात फंस गई. इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस व्हिच वाज हेल्ड इन लंदन, गांधी वेंट along with this people. He was not the part of first, he was not the part of third. You get it? After this, what happens is, after seeing all these issues, a new act has been passed. That was called Government of India Act of 1935. Background समझो. अब थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ. We'll make you. ठीक है, चलो लिखो. The third, after the third RTC, round table conference को पहले round table conference लिख लो, then write only RTC.
A white paper on the new constitution of India was prepared, which contained three major proposals, namely federation, provincial autonomy, and safeguards, which vested spatial powers in the central and provincial executives. इसके बाद लिखो मेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. पहले बुलेट्स लिखो, फिर एलाबोरेट करूंगा. क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन. सेकंड, provincial autonomy. Third, division of power. Fourth, diarchy at center. Fifth, extension of franchise. Sixth, establishment of new institutions. ठीक है, पहला लिखो, पहले को एलैबोरेट करते हैं. क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन. The act prescribed federal structure comprising all British Indian provinces and the princely states. भाई princely states कौन कौन से थे हिंदुस्तान के, ये बताओ पहले. एग्जाम्पल में लिख दो, फिर कहीं बचा तुम भूल जाओ. अच्छा, मैसूर, which was ruled by Rajas under British India. Okay. The British Indian provinces had to mandatorily join the federation. But this was not compulsory. But to join the federation. But this was not compulsory for the princely states. Interestingly, the federation never came into being. Second point था provincial autonomy. Being, B-E-I-N-G. Provincial autonomy क्या लिखो? The act for the first time recognized provinces as having separate legal entity. And introduced provincial autonomy while abolishing the system of diarchy in the provinces. Division of powers में लिखो. The act divided the powers between the center and the provinces in terms of three lists. भाई हिंदुस्तान में 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? 6 के शेड्यूल में दी हुई.
अच्छा, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या चीज होती है? एजुकेशन इज इन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट? और हेल्थ, पीआरआई और पोस्ट मतलब these are important but not so important, but still last year there was a question on reserve subjects. अब भाई रिजर्व सब्जेक्ट्स यूपीएससी में किसके पास होंगे? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंटर के पास रहेगा, अभी भी रहता है. पुलिस किसके पास है? there was a question on police. No, I'm not saying that. There was a question in last year that does local state government can make their own laws as far as police is concerned. Why? They will be making changes according to their convenience. So how can a center make those laws with respect to the state? The state knows what has to be done implemented police. So this was the question, one of the statements. Okay. Anyway, federal list was the first list. ठीक है? Federal list, three list में से एक list था federal list. अभी क्या बोलते हो उसको? Union list. Yes. And the provinces in terms of three lists. ठीक है? The first list was the federal list, which is today's. Okay. Then we had provincial list, and the third one was concurrent list. अभी भी है concurrent list तो? Okay. Is concurrent list, yes. Then we had diarchy at the center. Actually, four lists है, उसमें residual भी होता है. हाँ, दो लड़कियां लड़के को दबा देती है ना, मारती तुम तक में पकड़ गए हैं, वो तो पंजाब की है, वो लड़ते नहीं हैं तुम लोग. She smoked, she gave me a smoke. I think she fights. That's why maybe you'll be having खड़े खड़े बाल. से बाल तो नहीं पकड़ती हैं, हैं? हैं? ये तो हाथ रख देगी इसके ऊपर तो इसकी सांस रुक जाएगी. 2.5 किलो का हाथ है इसका. She doesn't look innocent. दांत मत काट दियो उसके नहीं. Anyway, थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया था? डायarchy एट द सेंटर, राइट? इसको लिखो भाई. द एक्ट abolished डायarchy एट द प्रोविंशियल लेवल, but introduced it at the center. The act abolished diarchy at the provincial level, but introduced it at the center. अभी तुम्हारा बोर्जुआ से मुझे कुछ याद है कॉलेज का. What happened was, in 2008 I was in sports actually. तो क्या होता था? We used to have practice sessions at 7:38. तो मेरा तो एक ही लक्ष्य था, लड़कियों को इम्प्रेस करने का. खेलना बहुत खेल लिया था, बस मेरा एक ही एम होता था, बस लड़कियों के लिए खेलूंगा, नहीं तो खेलूंगा ही नहीं भाई. Though I got to sports quota, I got like 86 में भी DU में नहीं एडमिशन मिलता until you had 96, but I had nationals, so मेरा national medal था उस वक्त, so I got into sports and all. ठीक है. So there was a girl called Jayati Chadda, so very tall, taller than me, इतनी बड़ी हो गई मुझसे हाइट में, but बहुत अच्छी दिखने में. So हमने कहा यार कहाँ ताजमहल, कहाँ गरीब आदमी. So but yes, so I was coming out of practice and all. हम लोग मतलब I never used to like keep up with. मैं थोड़ा वैसे ही रहता था normal, कपड़े पहने नहीं पहने, मतलब निकल करने चला जाता था क्लास में, because I used to sweat a lot. So we used to have this session at 7:30 to 8:30. So 8:30 I was coming. तो मैं ना खरोच लग जाती है, हो जाता है फुटबॉल में भी लग जाती है. So I came and I was like, तो she asked me, जेती उधर से आती है, मेरा why are you limping? अब किसको पता what is limping? So you have to keep up with people. So you're an English speaking person. अब हम देसी मलंग आदमी. So it's limping and अब मुझे उसको दिखाना है कि मुझे पता है what is she trying to ask me. मैं क्या बोलूँ? क्या हुआ पैर में? उसके लिए पूछ रही है. मैंने कहा ऐसी चोट लग गई. मैंने कहा क्या बात, कुछ पूछ रही है तो कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा तो जेब में रख लीजिए तो पकड़ के. ये द्वारा बॉर्नविटा पी के आया थोड़ा सा, फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग. बट वेरी प्रिटी, वेरी गुड. शी वाज लाइक कितनी लंबी होगी? शी मस्ट बी 5'8". 5'8" की लड़की समझ लो, 5'8" की लड़की 6 फीट का लड़का चाहिए कम से कम, मतलब अच्छे पेयरिंग के लिए. व्हाट डू यू से? बता भाई, यू अंडरस्टैंड ना? तो मेरे को ये बात समझ में, अपनी औकात में रहो, अपनी सही लड़की बताओ. फिर मैं 5'4", 5'5" से कभी ऊपर गया ही नहीं. पार्टीज में जाता था, आई यूज्ड टू टॉक टू ओनली गर्ल्स हु आर लाइक 5'4". क्या बोल रहे हैं? 5.5 गर्ल इज वेरी टॉल. माय गर्ल इज लाइक 5'4". मेरी वाइफ 5'4" है.
मेरी मम्मी कह रही इतनी लंबी लड़की लेके आया। मैं कहा मम्मी ये तो अभी सबसे छोटी पढ़ के लाया, अभी तो लाइन में गई थी, मतलब ऐसे मजाक कर। Before this I was like seeing somebody, she was पहाड़ी too, but she was skinny, but हो नहीं पाता ना किसी के साथ शादी का मामला। शादी तो एक से करनी है ना भाई, हमारे देश में तो नहीं चलता उसको पक्का उसको धक्का। गर्लफ्रेंड खेल लो आप, लेकिन शादी तो करने के लिए तो आपको वो देखना है ना, कुछ देखना है। Understand what I'm trying to say? You will not understand. You will understand after 10 years. So the point I'm trying to make here is like before 10 years I used to think differently about women. Now I think यार partner should be like this. I don't talk to people just because I used to talk to anyone. मैं तो किसी भी लड़की से बात करता था, कोई भी। अब तो मुझे लगता है मैं किससे बात करूं, मैं I'm very particular about talking to people, specifically girls, because girls don't talk initially, but when they talk, oh my god. No, I'm not saying they will talk negative or positive. I'm not saying that. They're talkative actually. Babbling. No, depends. Again, if a beautiful girl is speaking in front of me, I will not stop her. I will listen to everything and I will remember everything. But caveat, अगर कोई ऐसी लड़की बोल रही है तो I will not listen to her. I'll make sure she's not like disrespect नहीं करना. That's what I realized. कि when we are not, देखो यार क्या होता है ना, guys का problem क्या है, वो अपने को हवा समझते हैं। यार अपने आप को बनाओ ना। देखो यार क्या होता है कि कई लड़के यूट्यूब वीडियो वाले बोलते हैं कि अपने को कुछ बना। अरे यार अपनी ग्रोथ में ध्यान दे भाई। If you like somebody, talk to her, message her, call her, और talk to her, और फिर अपना काम कर। अब ब्लॉक किया तो फिर किसी और को ट्राई कर। क्या हो गया इसको क्यों देख रही है? It's the same goes with girls also. If you like somebody, just have guts to talk to him. Don't tell her because girls won't say it. I don't know what. If you have guts, because I came to know like क्या बोल रहे हो तुम लोग? Yes, मुझे इस लड़की ने मिली जिनको guts हो, but I had to. The point is, express yourself the way you want to. I just want to be friends with you. It's okay. If I don't want to be friends with you. I was so friend zoned so many times. तो मैं समझ गया this is friend zone. आधे लोगों को तो पता ही नहीं friend zone किसे कहते हैं। क्या होता है friend zone? अब देखो क्या गुंडा बनेगा रे तू। Actually friend zone में। Friend zone में गए तू। So then we can talk about it. So I know how to come out of friend zone, so it's okay. मैं तेरे को secretly लिख के दूंगा 2-3 tips, voice tips only. No. Then there's a problem. If you're a friend zone guy, then everybody will friend zone you. Like nowadays, it's not a concept of bhai zone. Na? It's just a friend. Don't be just a friend. Yeah, be a man. You want to. I mean, see, take a stand for a girl. If you like somebody, tell her that no. उसके साथ नहीं घूमना है. उसके साथ घूमना है. I'm not saying dominate her, but the point is take a stand for her. ये नहीं कि उसके जाके 4-5 लोगों को थप्पड़ मार के आ गए। It's not like that. If she's my girl, she'll be with me. She'll be with me. Like I'll make sure nobody talks to her that way. My territory kind of a thing. So if she's a friend, then मुझे क्या फर्क पड़ता है? If she's talking to somebody, I still have so many friends. So like this, she's married to somebody or she's with somebody. How does it matter? It really doesn't matter at all. अब मैं अपनी energy यहाँ लगाऊंगा कि कौन मेरे से बात कर रहा है? All I don't keep phones also. Gone are the days. चलो भाई, आज खत्म कर रहे हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हें 16 तारीख के बाद दूंगा मेन से पहले। डायरार्की एट द सेंटर। द एक्ट अबॉलिश डायरार्की बता दिया था। कहां तक था मैं? Consequently, बताओ, the federal subjects were divided into 2 categories. पहला था रिजर्व सब्जेक्ट। अब रिजर्व सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? देखो भाई, एक्सटर्नल अफेयर्स लिखो, 2 सब्जेक्ट। पहला था रिजर्व सब्जेक्ट, उसके अंदर लिखना है डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, administration of tribal areas, still that is a thing, religious affairs जो मैंने तुम्हें बताया था। then लिखो transferred subjects, it included all other subjects which were to be administered by the Governor General on the advice of ministers elected by the legislature.
Okay, what is the fourth major point I made you write? It was establishment of new institutions, or something was there before that? Extension of franchise, very important. Nearly 10% of the total population got the voting rights or right to vote. I repeat, nearly 10% of the total population got right to vote. ठीक है भाई, उस जमाने में don't say that all the women got voting rights. टिक मत करके आ जाना. Only limited 10% people had the right to vote. There was a question. अभी इसके बाद मैं I'll make you, मैंने सब बना लिया है तुम लोग के लिए. Ancient का past बना लिया है, modern का बना लिया है. I'll give it to you right now after an hour. Past years, do past year now. 30 days. आ गया admit card? आ गया admit card. कहाँ हो? मैं आ गया भाई. अरे कोई बात नहीं. अरे इसको पागल ही हो गए लोग. देखो हाथ में पसीना आ रहा है इसका. क्या यार? चेक कर दो. You guys remind me of my time. देखो भाई देखो. आया नहीं? श्योर? 30 डेज पहले तो आ जाता है यार. अच्छा चलो फिर चलो आ जाओ. नो नो नो, आई थिंक एक दो दिन में आ जाएगा. डोंट वरी. ठीक है चलो. फॉर द फर्स्ट टाइम, इसके बाद लिखो, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है गाइस. फॉर द फर्स्ट टाइम द डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. With the help of this act, though the franchise was based on the criteria of property qualifications. Guys, establishment of new institutions में से 1935 में क्या बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है. आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखो. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एक बड़ी सब हेडिंग लिखी होगी तुमने, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ इट. आरबीआई वाज लाइक 1934 के एक्ट के हिसाब से बना था. ओके, देन वी हैड योर फेडरल रेलवे अथॉरिटी. देन वी हैव योर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. अच्छा सेम 1935 इसी एक्ट से बना था भाई ये. ठीक है, रेलवे अथॉरिटी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके, सो दीज आर इंपॉर्टेंट. देयर आर सो मेनी बट इतना टाइम नहीं है. ठीक है गाइस, लेट्स डायरेक्टली कम टू दिस स्लाइड. 35 तक का हो गया. नाउ आई विल गिव यू द कंटेक्स्ट हाउ वी आर रीचिंग अप टू दिस. What is this? अच्छा, election. You see, क्या हुआ? जब मौका मिला तो तुम चौका मार देते हैं. क्या हुई? टाइम नहीं भाई. इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, बता दिया मैंने, लिमिटेड फ्रेंचाइज था. दिस इज हैपनिंग बिफोर 1940. लिख लो पहले, उसके बाद समझाता हूँ.
fervor, FERVER, मतलब माहौल. Done. First, the very important point is the elections of 1937, which we just talked about as per the Act of 1935, was happening on communal lines in northwest part of India. That makes it Sindh, Baluchistan area. वहाँ पर Muslim majority is getting. That means who is getting the majority? Muslim League. In Bengal also, Muslim League is getting this thing. अंग्रेज में बहुत तेज थे. अंग्रेजों ने डिवीजन शुरू कर दिए थे पहले से ही. Partition of Bengal on communal lines, it did not affect. Then Morley Minto reform, it did not affect. 1920s में जब खिलाफत का इशू था, तो gradually Muslims were coming up as a separate identity. Then non-cooperation movement, and Jinnah. You see, Muslim League came to know that abhi to problem hai. Why? See, a lot of Muslim families even now are very uneducated. Now, Mandal Commission came to India in 1990s, had this very important thing, divide and rule अभी भी है. दलित leaders, उनके मतलब वो खुद बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, सारे Sikh, Akalis, like they talk about peasants. अरे, the leaders and the people are very different. Coming back to this, Jinnah was kind of a lawyer, Cambridge University का पढ़ा हुआ बंदा था यार. Gradually he drifted from the INC politics. Why? Because he came to know that मेरी identity तो नहीं बन पाएगी. Muslims and Hindus are historically separate identities. Even I can tell you, in the night of the partition, when partition was announced, Hindus and Sikhs had this insecurity. Ask her, कि there is a kind of historical Sikhs and Muslims are two, this thing, separate identities. क्योंकि क्या हुआ था historically, when these people, Mongols or Mughals came over India, they came through northwest. Where did they attack? Punjab, Haryana. So that was the first area of contact between us, our people and those people. First thing. Second thing, historically, हमारा चूल्हा ऐसा है, उनका चूल्हा ऐसा है. They keep beard, they shave this, we don't shave this. And if you see very closely, Muslims and Hindus are similar. अगर आप पगड़ी हटा दो, there's no difference. But these things are being created. Even Zayn Malik, who's Zayn Malik? देखो, but he's a Muslim. तेरा प्यार बोल रहा है, तू नहीं बोल रही है. हाँ बोलो. Indian he's a K-pop. क्या है K-pop? हमें बता यार, हम भी सीखेंगे यार. क्या? तो girls तो like it. वो तो ब्रिटिश है, अमेरिकन इज नॉट अमेरिकन. इट्स ब्रिटिश. But I really like her. कौन है ऐसी भागी लड़की? अभी इस दुनिया में अभी वही चल रहा है, तो शुक्र है मेरी सही टाइम पे शादी हो गई मतलब. But girls are not into अभी manly boys में भी तो. वो 18-19 निब्बी. तो बच्ची हैं, हमको तो क्या है, फर्क ही नहीं है. उनका टाइप है, आप क्या कर सकते हो. हाउ कैन वी. यस. So coming back to Zayn Malik and this politics, Jinnah. So first thing is from here. Then there were people who were dissatisfied with Gandhian politics, and now things are being, elections are happening. So there's a kind of communal politics which is coming up. On top of that, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose were also new leaders coming up. So there's a lot of new things coming up in India. 35, post 1935. On top of that, socialist power I've talked about. Very important major international thing is Germany is rising, and USA also. In Germany, under the leadership of Germany, economically is very much becoming robust. उसमें क्या बोल रहा है? He's using that phase of nationalism, Aryan race, that we had been exploited
in the Second World War, because it was only Germany who was defeated in the First World War, and there are called war reparations. Warsaw Pact, or Treaty of Warsaw, in which Germany lost against British, and it was Germany who had to pay all the war reparations. अब you will ask me what is reparation? जितना भी खर्चा हुआ ना सब ये करेगा, मतलब खाया पिया बहुत लोगों ने और खर्चा देगा जो एक लड़का बेचारा गया लड़कियों के बीच में। नहीं, लड़की ही देती मेरे इसमें, तो मैं तो इसके खुश करने के लिए बोल रहा हूँ इसको। My aim is to make this guy happy. ठीक है भाई? You know, we are boys, यार, boys will be boys. I'll always be in this team. अरे यार पता है, the point is some things are in your software. You cannot change my software, conservative चीजों को छोड़ के, but apparently you realize that कई लड़कों को लड़के पसंद हैं. I realize कि अच्छा नहीं भाई, अपना डोमेन है ही नहीं वो, समझ रहा ना? So yes, so you understand ना? If you understand yourself in this age, then you are sorted. If you don't understand yourself when you are in 30s, तो फिर क्या मतलब है? Okay, चलो भाई. So इससे क्या होगा? अब देखो 1990s में there is a rise of Hitler. 1919 में he is just a soldier. Gradually he becomes the Reichstag पार्टी का, he becomes the leader. अब क्या हो रहा है? बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, and there is a माहौल created of Second World War. In this background, let's understand the Quit India movement. In 1939, we see Germany attacked Poland. जर्मनी के पास एक दूसरा गांव है, मतलब दूसरा वो है पोलैंड, तो तुम्हें पता ही होगा पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सो. ठीक है, तो जर्मनी अटैक्स पोलैंड एंड देयर इज अ स्टार्ट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर. था ही हेवी एक्शन एज रिएक्शन. So in this backdrop, India was made the party of the Second World War without being asking our अरे इसके बाद आएगा our see political leaders were there in. अभी इलेक्शन हो चुका था 1946 में, जिस पे वोटिंग क्या हुई थी? कम्युनल वोटिंग हुई थी. 37 की जो पार्लियामेंट मतलब हमारे लेजिस्लेचर था, उसमें लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके पास बार्गेनिंग नहीं थी, बट दे हैड पावर्स. सो 1939 में उन्होंने रिजाइन कर दिया व्हेन सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक अप, बिकॉज इंडिया वाज मेड द पार्टी. इंडिया वाज मेड द पार्टी विदाउट बीइंग आस्किंग आवर लीडर्स. तो उन्होंने बोला हमारा मतलब क्या है भाई, तुम्हें हमें चुना ही क्यों है? ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया. अब इसके बाद व्हाट वाज द इशू? सेम, कोई भी आंदोलन का इशू क्या होता है? इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट. यहां पर भुखमरी हो रही थी, वहां पर राशन भेज दिया. ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन, टैक्सेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक हो गया? चल लिखे थे इसको थोड़ा. August movement is that's what we call it. ठीक है, लीडरशिप इतना लिखो अभी इसको. हाँ सर. हाँ, वो उसके बाद की बात, अभी इसके बारे में बात करेंगे. ऑगस्ट ऑफर was given in 1940s. 40, then 1942 we had Cripps mission. उसके बाद आएगा वो भी. ठीक है, मैं उसको करवाऊंगा सेपरेटली. ऑन August 8 इसकी क्रोनोलॉजी भी करेंगे. ठीक है, फर्स्ट को भी लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको सिर्फ इतना ही लिखो बस. लॉज ऑन दिस. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. इसका भी करेंगे अभी. यहां तक ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, सेकंड पॉइंट इज दिस.
डू और डाई तक क्या? ठीक है, लिखिए। अब लिखो ऑगस्ट ऑफर 8 अगस्त 1940। इसके बाद लिखो, अब पहले से क्रोनोलॉजी लिखवा रहा हूं। इंडिविजुअल सत्याग्रह अक्टूबर 1940 till December 1941. I'll repeat. August offer 8 August 1940, then individual satyagraha October 1940 till December 1941. Cripps mission March April 1942. Okay, after that quit India movement September 1942 till September 1944. Sorry, August 1944 till September 1944. August 1942 September 1944. This is quit India movement's time period. अब देखो, मैं पहले समझो उसका लिख लिया। So the chronology. अगस्त में हिटलर ने अटैक कहां कर दिया? पोलैंड में। ठीक है, अब पोलैंड में अटैक करते तो इंडिया का सपोर्ट तो चाहिए, इंडिया को तो अटैक कर दिया। तो इंडियंस को दे गेव कि आफ्टर द वॉर देयर विल बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बैकग्राउंड दिया। नाउ द थिंग्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूएसए एंड जर्मनी। किसी को नहीं पता था या जर्मनी जीत सकता है या तो यूएस। मींस यूएसए वाज now rising like anything. First thing is the big businesses. I don't want to get into that, but the point is Ford का नाम सुना होगा तुमने? Ford was a very big businessman of 1920s. Henry Ford. Then on top of that you had your Mitsubishi. Mitsubishi पहले टैंक बनाता था। ठीक है, ये Mitsubishi वाले पहले टैंक बनाते थे। In Second World War they used to make tanks. So these जो पुराने पापी हैं लोग बहुत। So coming back to the story, so August offer was just given because they was fearing Hitler. अब हिटलर अगर साउथ ईस्ट एशिया में अटैक कर देता है और वो कैप्चर कर लेता है तो द ओनली कॉलोनी दे आर हैविंग व्हिच वाज इंडिया विल बी कैप्चर्ड बाय होम। सो ही वाज देयर वाज अ कंसेशन गिवन कि भाई तुम हमें सपोर्ट दो, यहां जरा रौला मत पाओ, क्योंकि अगर इंडिया में रौला करते तो यहां भेजनी पड़ती ना सोल्जर्स। सोल्जर्स की जरूरत कहां थी? जर्मनी। समझ गए? 50,000 सोल्जर्स ऑफ इंडिया वेंट देयर। इट्स समथिंग बहुत बड़ी बात है। दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी सिक पीपल्स आउटसाइड इंडिया। वो वहीं सेटल हो गए बढ़िया, अंग्रेजों की शादी कर ली उन्होंने बस। ठीक है, एनीवे देन अब ये तो हो गया। उसके बाद गांधी ने कहा कि यार अच्छा ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। बट गांधी वाज ऑन ब्रिटेन साइड, बट द यंग लॉट ऑफ इंडिया लाइक द सुभाष चंद्र बोस हैड यू सी देयर इज अ सीरीज ऑफ लेटर बिटवीन बोस नेहरू एंड दिस थिंग। इन 1940 रामगढ़ का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो गांधी ने बोला नॉट एनीवन बट Nehru will be my successor. Nehru बोलता था भाई गांधी तुम there are series of letters between these two and Nehru is saying Gandhi I don't understand what you do. तो रातों रात तुमने चौरी चौरा में बंद करवा दिया, क्या जरूरत थी? Sometimes I don't understand he says, and उस बीच में भी he is declaring him. So that was an understanding kind of a thing between those leaders. ये कोई personally लेते थे वो लोग। Left right sector like Sardar Patel was also like that. Bose Sahab was also like that. Though they had who called Gandhi father of the nation. He was Bose. So they had differences of opinion. He is not in India, but he is calling him the father of the nation. Bose was pro-Germany. Gandhi was not.
So in this context, first British offered concessions. Then there was individual satyagraha to make the momentum for mass struggle. Then there was Cripps mission. Dissatisfied with the August and Cripps mission, we launched Quit India movement along with unemployment, inflation, blah blah blah. समझ गए? लिखें? चलो. Communalism भी चल रहा है ना problems साथ साथ. Guys, is it making sense or okay? Now when you read your spectrum, ना everything you can link. Now if you see इसमें से क्वेश्चन निकल के आएंगे. पहले क्या हुआ था? पहले क्यों हुआ था? You will be able to understand why was individual satyagraha given? Because before we start a mass struggle, we need to make tempo. ठीक है? No change वो तो 1920s में थे. So I'll just stop. मैं भी समझा देता हूँ कोई बात. Okay, मैं कहाँ लिखा क्या लिखा रहा था? No, I give you a chronology also no, of August offers. Yes, August offer के main points लिख लो. Dominion status as the objective for India. Expansion of Governor General's Executive Council. Having majority representation of Indians. Third point, setting up of Constituent Assembly after the war. Up of Constituent Assembly after the war. Last point, no future constitution to be adopted without the consent of minorities. The Congress, however, rejected the August offer. Okay. Individual satyagraha. Frustrated at the government's position. That no constitutional advance could be made till the Congress came to an agreement. Till the Congress came to an agreement with the Muslim communalist and angry at the high-handedness of the communal or of the colonial authorities. High-handedness of the colonial authorities who were systematically issuing ordinance after ordinance के बाद भी after ordinance लिखना है, taking away the freedom of speech of many nationalist workers. Now we had this Cripps mission. Okay. So it also talks about propose the creation of All India Union. Still, we are asking about independence, पूर्ण स्वराज and giving dominant status. इसको लिख लो. पहले Cripps mission लिखो, फिर then write this point.
This is the first point. This point is very important. Nominated by the rulers in case of princely states. And third point, first, second, and third. This is a very important point. Right to secede from the provinces. If some provinces are not ready to get into union, they can have their own this thing. Province. I'm talking about princely states. Likha? Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at ProdEgyIAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join ProdEgyIAS and stay ahead.